Okay, so as we all start our class with the name of Almighty Allah, so today Abraham will be reciting any surah. Yes, Abraham, unmute yourself. Bismillah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Very good. Thank you. Jazakallah, Abraham. Okay, so let's don't waste any time. Let's revise. Let's give a small review on what we learned in our previous classes. So can anyone help me out that what did you learn in the previous classes? Can anyone raise your hand through Zoom? Can anyone help me out? Okay, Abraham. Yes, Abraham. What did we learn? It's your numeracy class. Teacher, we learn and teacher we learn the how to How to? Okay, let's give a chance to Alicia. Yes, Alicia. Yes, Alicia. Unmute yourself. Ji Alicia, what did you learn in the previous class? decimal. Okay, you learned about decimal. Okay, what else did you learn? Only decimal? Multiplication. Multiplying a decimal. Okay. What else? What else? Okay, thank you so much, Alicia. Let's give a chance to Zainab. Yes, Zainab, what else did you learn? Division of decimal. Division of decimal. Excellent. Grams and kilograms. Very good. Very good. Yes, Hassan. Hassan also wants to tell something. And unmute yourself. Miss, decimal, multiplication decimal, and division decimal. Okay, very good. Okay, didn't we learn that how to divide or multiply a decimal by 10, 100 and 1000? Did you learn that? Didn't you? Didn't we learn? Faria, stop doing it, bete. Okay, Faria, don't do this, beta. Okay, so I hope you all remember that I teased you in the previous classes that how to multiply a decimal by 10, 100 and 1000 and how to divide a decimal by 100, 10 and 1000, right? Is it clear to everyone? Okay, is there any confusion? Is there any confusion? Okay, Abraham, you want to say something? You want to say something, Abraham? Okay. Okay. Anyone else? Any questions? Okay. So now I want two things with you all. One, a rough copy, and the second, your worksheet, numeracy worksheet pack. Bring both the things. Your worksheet, numeracy worksheet pack, and your rough copy. Okay, Alicia, I can see your worksheet back. Other students, open your camera, Hiba, Fahik, Fariha. Okay, excellent. Very good. Very good, Alicia. Very good. Okay, so the worksheet that I'm going to show you on the screen, I hope you all have completed that without any confusions. Because I am going to ask that what is the answer of those questions. Just give me a second. Okay, so I hope everyone can see my worksheet. Give me a thumbs up through Zoom. Give me a thumbs up through Zoom.
If you can see the worksheet. See the worksheet on the screen. Faik, sit properly. Give me a thumbs. Okay, excellent. Very good. Okay, let's see who's raising hand. Yes, Ayan Abbas, you want to say something? Unmute yourself, beta. Unmute कीजिए Ayan Abbas. Ayan Abbas, you want to say something? And yes, Ayan Abbas. मिस मैंने अपने सारे होमवर्क यूनिवर्सिटी में भेजे हैं, पोस्ट किए हुए, लेकिन आपने वो चेक किए ही नहीं है। Beta, I did check, but I did not mark. Now I will mark them very soon because I wasn't having any internet connection because of shifting. So I will be marking them. Okay, don't worry. Okay. 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 So here is the worksheet, and I told you that we'll add grams into grams, right? And when we convert it into kgs, we multiply. Sorry, when we convert it into kgs, yeah, what we do is when we go from grams to kilograms, what we do? From big to small, oh, sorry, small to big, we divide the answer with 1000. हम आंसर को डिवाइड करते हैं जब हम बिग टर्म में जाते हैं. The kg is the big term and the gram is the smaller term. Okay, so unit, basically these are the units. So okay, so what happens is when we will go from small to the big unit, we divide, and when we come from big to the small unit, we multiply. Okay, so same happened in this. Okay, so who's going to answer the first question? You when you give the answer, I'll unmute you by my own self. Okay. Now let me tell you one thing. When you give answers, let's suppose I am giving an answer. Number three ka I am giving you the answer. Okay. The question is 7 kgs plus 4,200 grams. Now obviously we cannot add kgs into grams. So what we do is we will change this gram. Oh, sorry, we will change this kilogram into grams. ठीक है, हम इस 7 kgs को ग्राम्स में चेंज करेंगे एंड आफ्टर चेंजिंग इट हम उसको ऐड करेंगे क्योंकि दोनों ग्राम्स में हो जाएगा. जब हम उन दोनों को ऐड कर लेंगे फिर उस आंसर को वी विल डिवाइड दैट आंसर विद 1000 टू गेट द आंसर इन kgs. Okay, is it clear to all of you? Give me a thumbs up through Zoom. Thumbs up through Zoom. Thumbs up through Zoom. Yes, Ayan Ashraf, you want to say something? कुछ कहना है? Ayan Ashraf, unmute yourself. I can't hear you, Ayan. I still can't hear you. Yes, Alicia, you want to say something? You're raising your hand. You raised your hand. Miss, I know the answer. Of all the questions? Yes, miss. Okay, I'll be giving you a chance to give the answer. Yes, Ayan Ashraf, I've unmuted you again. बोलिए बेटे. Beta. Miss, answer is 7,000. Excellent, very good. But I wasn't asking. It's okay. It's absolutely fine. Okay, so I am unmuting you one by one. Unmute yourself and give me the answer. So the question one says, okay. So question one says 5,000 plus 5,000 grams plus 2,000 grams is equals to, you have to give the answer in kg. So Abraham, I'll give a chance to all of you, don't worry, okay? Abraham, unmute yourself and give me the answer. Teacher, Yes. it is 7 grams. Say, how is it 7 grams? It's supposed to be 7 kilograms. Isn't it?
Yes, it is 7 kilograms. 7 kilograms. Okay. So Abraham, I have a question. Tell me one thing, that when you add 5,000 grams into 7,000 grams, oh sorry, 2,000 grams, so how did you convert it into kilograms? आपने उसे किस तरह कन्वर्ट किया? क्योंकि आपने तो ग्राम्स को ऐड किया, आपने किलोग्राम्स को तो ऐड नहीं किया. Yes. Teacher, because it is a one hiding decimal between every numbers. Okay, okay, but which sign did you use? Which sign did you use to convert it into kilograms? Teacher, I go to the right side. नहीं, आपने कौन सा ऑपरेशन यूज किया? आपने एडिशन किया, मल्टीप्लिकेशन किया, डिवीजन किया, आपने क्या किया कि आपका आंसर किलोग्राम में आया? Teacher, I did division. Excellent, very good, Abraham. Okay, so don't raise your hands, I'll be giving a chance to all of you. Okay, so in question number 2, they are asking that 2300 grams plus 1100 grams is equals to kg. Okay, so this question, this is the question. Bete, stop raising your hands. Okay, so Abdul Bari, unmute yourself and give me the answer of the second question. Abdul Bari. Abdul Bari, I can't hear you. Abdul Bari. 3.4. 3.4, and what will be the unit? Tell me the unit. क्या पूछ रही है? बेटा आप मुझे बताएं, आपने क्या यूनिट लगाया? 3.4 ग्राम्स या 3.4 किलोग्राम्स? Miss grams. हैं? You are supposed to give the answer in kilogram. Okay. तो आप तो ग्राम और ग्राम को ऐड कर रहे हैं ना, फिर हम उसको कन्वर्ट करेंगे तो किलोग्राम्स में आंसर आएगा. Do it again. Okay, take help. Till then, let's give a chance to. Okay, Ayan Ashraf, unmute yourself and tell us what will be the answer of the second question. Can't hear you. I can't hear you. Can't hear you, Ayan Ashraf. Ji, I can't hear you, beta. Okay, Ayan Ashraf, take help from Mama. Till then, I'm giving a chance to. Yes, miss. अब आवाज आ रही है? Oh, bete, I unmuted you. I'm giving a chance to Hassan and Haq. Miss, Yes, जी. सेकंड नंबर का पूछिए आप. Yes. मिस मैं आपको केजी में और ग्राम में दोनों में जवाब दे सकता हूँ. Okay, so first of all, give me the actual answer. That is must be given in kilograms. So what is the answer first? Tell me that. 3.4 kg. Excellent. Okay, so I have a question. That which operation did you use to convert the grams into kilograms? Grams into kilogram. Miss division. Excellent. किससे divide किया? Did you divide it by 100 or by 1000? Divided by 1000. Excellent. Very good, Hassan. Okay, so let's coming to, okay, so when he gave the answer 3.4 kilograms of question 2, and that is absolutely correct, because when we will add grams into grams, okay, now we are so हमें क्या देना है? Answer जो है kilograms. We are supposed to give the answer in kilograms. So we will convert the answer of these grams into kilograms by dividing by 1000. Okay. Coming towards the third question. Okay, Alicia, I want the answer from you of the third question.
Alisha, unmute yourself and give me the answer, and even tell me the procedure, what you will do, and I will get the answer. Yes. Assalamualaikum, miss. Walaikum assalam. Miss, the answer is What is the miss answer? Yes. 11.2 kilogram. Excellent. Okay, very good. The answer is very correct. But Alisha, how did you add kilograms into grams? What did you do? How did you solve this question? Miss, first I convert kilogram in gram. Excellent. Then I got answer 11 to 100. Okay, you got the answer 11 to 11,200. 1000 Okay. gram, Okay, and very then good. I got answer and I divide, Very good. so I get the answer 11.2. Excellent. With which number did you do the division? किस number से division किया आपने? 100. 1000 से नहीं करनी चाहिए थी. Yes, miss. It should be done with 1000. Okay. Well, you have given the correct answer. Excellent, Alisha. Very good, bete. Okay. Now for question number 4, I'm giving a chance to Malahim. Yes, Malahim. Give me the answer of question number 4. Malahim. 8.9. Okay, excellent, Malahim. Malahim, I have a question. Malahim, आपने grams को तो add कर लिया. Very good. But आपने उसको kgs में जाने के लिए कौन सा operation use किया? मैंने सारे किए हुए. बेटे आपने इस वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन 4 में आपने ऐड किया तो आपके पास तो आंसर 8900 आया होगा. ठीक है, फिर आपने उस 8900 को किस नंबर से डिवाइड किया कि आपका आंसर केजीज में आ गया? मलायम, आई हैव अ क्वेश्चन बेटा, मेरे क्वेश्चन के आंसर दीजिए. आई डोंट वांट टू सी द वर्कशीट. मलायम, मुझे वर्कशीट नहीं देखनी है बेटे, मुझे आपसे बात करनी है. मुझे आई हैव सम क्वेश्चंस, मुझे कंफ्यूजन है, मेरी कंफ्यूजन को क्लियर कीजिए. मलायम, आपने किस नंबर से डिवीजन किया? आपने 8900 को किस नंबर से डिवाइड किया कि आंसर आपका केजी में आया? सॉरी, आई कांट हियर यू. मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही. आई कांट हियर यू बेटा, मुझे आपकी बिल्कुल आवाज नहीं आ रही. 1000, आर यू सेइंग 1000? I can't hear you, beta. What are you saying? I can't hear you. You divided it with 2000. 2000 से डिवाइड कर दिया आपने उसको. बेटा मुझे आपकी बिल्कुल आवाज नहीं आ रही. टेक हेल्प फ्रॉम मम्मा. मैं आपको दोबारा अनम्यूट कर दूंगी. ओके, टिल देन आई एम गिविंग अ चांस टू समवन एल्स. यस, हिबा. हिबा, unmute yourself. हिबा, open your camera and unmute yourself. Hiba ji, I have a question. Hiba, give me the answer of question number 5. Yes. Give me the answer of question number 5. Okay, miss. 5.0. Sorry. Sorry. 2.9. Okay, excellent. You are saying that the answer of question 5 is 2.9. हिबा, तो ऐसा क्या किया कि आंसर 2.9 में आ गया?
we divide किससे डिवाइड करा? we divide किस नंबर से डिवाइड किया? You divided it with 100 or 1000? 100 है 100 or 1000? Miss 100 No, we divided with 1000. हम उसको divide करते हैं 1000 से. Your answer is correct that it's 2.9 kgs. आपका आंसर बिल्कुल सही है. बट हमने जब इस ग्राम्स को ग्राम्स में ऐड किया तो हम उसको कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 1000 करते हैं, डिवाइड बाय 100 नहीं करते. डिवाइड बाय 1000 हम इसलिए करते हैं क्योंकि एक किलोग्राम में हमारे पास 1000 किलोग्राम्स के पार्ट 1000 किलोग्राम्स होते हैं. मतलब 1 किलोग्राम के अंदर हमारे पास 1000 पार्ट्स होते हैं, इसलिए हम उसको डिवाइड बाय 1000 करते हैं, डिवाइड बाय 100 नहीं करते हैं. इज इट क्लियर? तो डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो आंसर आएगा, दैट विल बी द करेक्ट आंसर. ठीक है? ओके, लेट्स गिव अ चांस टू, आई होप यू अंडरस्टूड. ओके, लेट्स गिव अ चांस टू फरीहा. यस फरीहा, अनम्यूट योरसेल्फ एंड गिव मी द वेयर इज फरीहा गॉन? Okay, Faria, unmute yourself and give me the answer of question number 6. Faria, unmute करें बेटे. Miss, Yes. the answer of question number 6 is 5 kilogram. Excellent, very good. What did you do to convert the answer? I have a question. आपने क्या किया कि आपका तो आपके पास तो 4 kg था, 4 किलोग्राम्स तो नहीं था, और कैसे आपने आंसर निकाला? How did you find out the answer? Fariha, unmute yourself, beta. अनम्यूट करें बेटे. मिस हमने डिवाइड किया ना किससे? 1000 को 4 किलोग्राम से. 4 किलोग्राम से डायरेक्ट डिवाइड कर दिया या पहले 4 केजीज को ग्राम्स में चेंज किया, उसके बाद उन दोनों को ऐड करा, फिर डिवाइड करा? ऐसे नहीं किया. By the way, okay, you are unmuting yourself. Okay, let it be. Okay, now I am giving a chance to Ehsan Siddiqui to answer question number 7. Ehsan Siddiqui, unmute yourself and give me the answer of question number 7. 800 grams plus 200 grams. Good. Answer. 1000 grams. Okay. Answer is 1 kg. Excellent. Very good. Very good. Very good, Ehsan. Thank you so much. Okay. Now I'm giving a chance to Ayan Abbas. Ayan Abbas, give me the answer of question number 8. Ayan Abbas, unmute yourself and give me the answer of question number 8. Ji Ayan Abbas. 7 kilogram. 7 kilogram. Okay, very good. But I have a question, Ayan. Ayan, हमारे पास जो है वो क्या नाम है, ये है 6.3 kg है. तो आपने इस kg को कैसे कन्वर्ट करा ग्राम में?
आपने केजी को ग्राम में कैसे कन्वर्ट करा? क्या कौन सा साइन यूज किया? मल्टीप्लाई, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन? मिस मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई बाय 100 और 1000? 1000। एक्सीलेंट अयान अब्बास, वेरी गुड। अच्छा, फिर आपका आंसर आ गया 7000। फिर आपने कौन सा साइन यूज करा जिससे आपके पास कौन सा साइन यूज करा कि आपके पास आंसर 7 kg आ गया? प्लस। मिस है प्लस। 7000 था। इज इट क्लियर? 7000 को आपने किस नंबर से डिवाइड करा? डिवाइड करते हैं ना केजी में आंसर लाने के लिए। डिवाइड करते हैं 100 और 1000। मिस 6.3 से डिवाइड किया। बेटा 7000 आंसर आया था ना आपका, जब आपने 6.3 को कन्वर्ट कर लिया था 6300 में। ठीक है? यस। Okay, your answer was correct. That is 7 kg. Okay. Okay, let's give a chance to Talbiha. Talbiha, give me the answer of question number 9. Unmute yourself. Talbiha, question number 9 ka answer. Give me the answer of question number 9. 125. Miss 1 minute. Unmute your beta. Unmute हुए हुए. I can hear you. Miss, yes, I am mute. And give Unmute, me, sorry. give me the answer of question number 9. Okay, Miss, I will solve it. You haven't done the homework? 1, 2, 3. Okay, has some students are still Zainab. Miss, Zainab. Zainab. Talbiya, solve it, hurry up. Then I'll unmute you again. Zainab, unmute yourself and give me the answer of question number 9. 845. आपको आंसर केजी में देना है। आपको आंसर केजी में देना है। आपके पास क्वेश्चन है 125 प्लस 720. Okay, it's grams, sorry. 125 grams plus, I hope you can see the screen. 720. Look at the screen carefully. फिर ये नहीं कि मुझे आपको स्टिल कंफ्यूजन है, बिकॉज हम अब आज की सब्ट्रैक्शन वाले सम करेंगे। अच्छा, अब व्हाट हैपेंस इज कि उन्होंने आपको कहा इन दोनों को ऐड करें। ठीक है, व्हाट वी डिड द एडिशन। ठीक है, हमने उसमें एडिशन करी। आपने ऐसी करी होगी ना 720, फिर यहाँ आए आपने दिया एडिशन का साइन 125। अब आपके पास क्या हुआ कि आपके पास आ गया यहाँ पे आंसर 845। ठीक है, अब आपने जब यहाँ पे आपने लिखा 845, सॉरी 845। अब इसको हमें क्योंकि केजी में लेके जाना था, सो वी डिवाइडेड इट, राइट? हमने क्या किया? डिवाइड किया। Yes. Okay, where's this?
अच्छा, अब हमने जब उसको डिवाइड किया, वो मैं ये स्क्रीन सॉरी. Okay, so it came 845. I don't know, my pencil isn't working. ठीक है, आपका आंसर आया 845. What you did is you divided it with 1000. 1000. ठीक है, तो जब आप 1000 से डिवाइड करते हैं तो आप कहाँ जाते हैं? आप लेफ्ट जाते हैं ना. 1 2 3. तो यहाँ आ गया डेसिमल और यहाँ आ गया 0. तो आपका आंसर क्या हो गया? 0.845. ये आपका आंसर है. Is it clear? Yes. Is it clear to all of you? It's clear to all of you? Okay. Yes, Hassan. Hassan wants to say something. Ji Hassan, unmute yourself. जी हसान बोलो बेटे. मिस मुझे आंसर देना था. अच्छा, ओके. क्या मैंने सही किया हसान? यस. ओके. अच्छा, let's come to the last question, that is question number 10. Who is going to give me the answer? जिसने raise hand पहले किया, I'll give the chance to that child. Okay, I saw Abraham raised. He raised a hand first. Okay, Abraham, क्या है answer? What is the answer of the last question? 1.440. अच्छा, one more thing. जब हम पॉइंट के बाद कोई नंबर आता है, लेट्स सपोज, एक मिनट मैं आपको भी करके बताऊंगी. एक मिनट. Okay, your answer is correct. Your answer is correct, Abraham. Okay, where's my? Okay, one more new thing. मैं आपको अभी बता रही हूँ. एक मिनट. Okay, so आंसर क्या था कि 1. Can you all see my screen? Okay. Can you all see my screen? No, teacher. Okay. What happened? Now? Can you all see my screen now? Can you all see this 1.440? Okay, so what happens is, इस बात को बहुत carefully सुनिएगा. 1.440 इसको हम इसको इस तरह नहीं पढ़ेंगे. 1.440 जब यहाँ डेसिमल आ जाता है ना, तो डेसिमल के बाद हम नंबर को अलग अलग पढ़ते हैं. ठीक है, हम नंबर को पूरा नहीं पढ़ते. लेट्स सपोज अगर मेरे पास नंबर होगा 12.25. ठीक है, तो हम फर्स्ट नंबर को तो प्रॉपर पढ़ेंगे, लेकिन जो पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद जो नंबर आते हैं ना, हम उसको सिर्फ एक एक करके ही पढ़ते हैं. हम इस तरह नहीं पढ़ेंगे 12.25. नो, 12.25, 1.440 इसको इस तरह नहीं पढ़ेंगे. 1.440 इसको हम पढ़ेंगे 1.440. ठीक है, लेट्स सपोज 12.1025 आंसर होता है, लेकिन हम इसको इस तरह नहीं पढ़ेंगे. हम इसको किस तरह पढ़ेंगे? 12.1025. ठीक है, दिस इज द करेक्ट वे टू रीड द numbers after the decimal. ठीक है, in mathematics. Okay, so your class is about to end. Rejoin the class and open your worksheet set. Okay, your class is about to end. Rejoin it. Okay.